Hello friends, good morning. Today is 2nd of February 2024 और इस वीडियो का टॉपिक है कि बॉन्ड मार्केट ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। सो चलिए डायरेक्टली चालू कर लेते हैं। दिस वीडियो एज यू कैन सी इट इज इन इंग्लिश, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश। तो ये जहां से हम लोग चालू कर रहे हैं, हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ माय ट्रेड्स दैट इज इन जीबीपी आईएनआर। सो जीबीपी आईएनआर हैज बीन, हम लोग बात ही कर रहे थे दैट इट्स इन अ मिक्स मार्केट सिचुएशन। इट हैज बीन अ मिक्स मार्केट सिचुएशन। हम लोग पहले एक बाई अटेम्प्ट लेने के बाद वी डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बट yesterday I went for a short and the short was really going good. As you can see, it dropped towards this point. Now, this could have been a beginning of a beautiful trend. Wednesday, Federal Reserve ने announced किया plans. Means it's not that open for rate cut in March. Maybe May rate cut is coming since 50 basis points. So Fed is not hurrying, which is positive for interest rates and which is definitely a bit positive for the US dollar. बट यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का थोड़ा एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में स्पीक डोविश, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बट इट डिड नॉट डू दैट। सो इफ इट वुड हैव डन, अगर ये सपोर्ट किया होता, देन दिस एम्प्टी लाइन वेयर जहां से ये सपोर्ट मिला है एग्जैक्टली, वो एम्प्टी लाइन वुड हैव बीन ब्रोकन, पूरा टूट जाता। Well, but empty line toota nahi, and they spoke. They are not at all thinking of rate cut. Only one of the member voted for a rate cut, but the main communication that came from the governor Bailey कि हम लोग rate cut के लिए ready बिल्कुल नहीं है. So that pushed pound higher. So that was expected. That was not concerning for me. बिकॉज वो मैं स्टूडेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि जो लोग ये बिजनेस में नए हैं, काइंडली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोनों साइड कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्वेरी आ सकता है, फिर मैं क्यों पोजीशन रखा? बिकॉज आई एम ए पोजिशनल ट्रेडर एट टाइम्स सिंस नोबडी नोज व्हाट बैंक ऑफ इंग्लैंड इज गोइंग टू से। सो ऐसे करके डर डर के शैडो ट्रेडिंग करके, पेपर ट्रेडिंग करके रियल ट्रेडर नहीं बन सकता। इसीलिए पहला जो क्वांटिटी होता है, ऑलवेज आई स्टार्ट विद द फोमो क्वांटिटी। But anyway, that's not the topic. What was concerning was the more strength in the GBP, in the euro, everywhere we saw got driven by the dollar. Dollar का weakness से सारा बाकी का strength आया, which was not fully anticipated. दो उसका reason मुझे clearly दिख रहा था. The reason that was happening is the bond market. US 10-year interest rate, let's look at the 15 minutes chart. Or say 75 minutes chart. It saw a further drop down. It has been declining, but the initial decline was in anticipation of the rate cut from Federal Reserve, which got diminished. But the US 10-year interest rate kept on moving lower. आज थोड़ा बढ़ रहा है. This could support dollar, but the main theme, it significantly declined, lead to a major rise in the ये जो मेजर राइज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड प्राइस शार्पली बढ़ा और इंटरेस्ट रेट गिरा. सो उसके बारे में वो अचानक इतना सारा ड्रॉप होने के पीछे कल शाम को कोई रीजन नहीं था. ऊपर से इकोनॉमिक कैलेंडर देखा जाए, इकोनॉमिक कैलेंडर में फेड वाज रिलेटिवली थोड़ा इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव, क्योंकि ये मुझे मार्केट्स में क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज रेट एक्सपेक्टेशन वाज more than 60% just a week before and above 50 before Fed. It just changed. Currently market 67% projection कर रहा है probability के साथ कि there will be no rate cut in March. So that is a bit of positive for bonds, especially long term bonds.
Then we had Europe inflation went down. We had manufacturing PMI, ISM manufacturing PMI, which was much stronger, though employment was a bit weak, but new orders were significantly strong, plus ISM manufacturing prices were significantly strong. This is also interest rate positive. ये भी interest rate positive है. Federal Reserve थोड़ा interest rate positive था. और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है जिसके लिए मैं एक सेशन होल्ड करूंगा. आई विल होल्ड अ सेशन टुडे regarding that we live in a globally connected world. This is an event focusing on the second most important event of the market, that is the non-farm, or kabhi kabhi most important event of the market, that is the non-farm payroll data. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इवेंट नहीं, डेटा. नॉन फार्म पेरोल और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आ रहा है आज 7 बजे. So there I'll be holding a session. So two of the event जो दिख रहा है, that is a bit interest rate positive, but यहाँ पे जो दिख रहा था और कल रात को sharply interest rate has declined, then what's it? कल एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज आया है. जियोपॉलिटिकल न्यूज आया, दैट इज द इजराइल और हमास के बीच में एक ट्रूस हुआ है. Okay, Israel and Hamas, if truce has happened, that is crude oil negative. So चलिए मार्केट में let's crude oil को देखते हैं. कमोडिटीज, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल कैंडल स्टिक्स. और इसमें चलते हैं क्रूड ऑयल. And let's look at the daily chart. Crude oil has dropped. Yes, it has declined. So ये फैक्टर हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट में कि क्रूड ऑयल इज लीड्स टू इन्फ्लेशन. इफ क्रूड ऑयल ड्रॉप्स, then overall inflation should drop, and that should lead to drop in interest rates. So that makes some sense. What it does not make sense is for the past 3 days this kind of drop, especially when Federal Reserve announced it's going to keep interest rate quite steady. तो इस मामले में चलिए फेड के पास चलते हैं. FOMC, Federal Open Market Committee. Sorry, this is not it. FOMC. ये रहा January 31st. Recent indicators suggest that economic activity, job gains have moderated, etc. If you look closely, यहाँ से एक ने एक कमेंट्स फेडरल रिजर्व हटा दिया. दैट इज the Federal Reserve means US banks are banking system quite sound and quite solid. Very interesting. Let's look at the चलिए फिर से एक बार प्रेस रिलीज पे चलते हैं और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी ये 31st को आया. दिस इज इट. ओपन माय रिलीज इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा. जस्ट अ मोमेंट. ये रहा इश्यूज FOMC स्टेटमेंट. The US banking system is sound and resilient. Okay, tighter financial condition and credit conditions for households and business are likely to weigh on economic activity. Okay. Then now go back. Let's come down to the latest statement. Latest statement is issues FOMC statement.
Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Job gains have moderated since early last year but remain strong. The unemployment rate has remained low. Inflation has eased over the past year. The committee seeks to achieve maximum employment. That particular banking line is completely missing. That may be just a simple omission, but that's highly coincides with another event. Let's look at, पहले देखते हैं S&P 500 को. ओके, US S&P 500 going up, strong comeback. It was a fall attempt. S&P is usually कोई भी crisis के time पे is the last one to break. A strong comeback and ये सारे global equity market को भी थोड़ा bull fuel करेगा. हमारे अपने निफ्टी मार्केट को तो जरूर. फिर डाउ को देखिए, not that strong. और रसल को देखिए, रसल हैज बीन कंसोलिडेटिंग, जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का इंडेक्स है, whereas S&P 500 is firing up. और इसमें यूएस रीजनल बैंकिंग ETF, रीजनल बैंकिंग सेक्टर dropping like crazy. It was 53 and almost 10% down, decline, regional banks. As the Federal Reserve is going to keep interest rate longer, the pain is being felt. Commercial real estate, lot of student loans, lot of trillions of dollars of unpaid loans. While S&P 500 ऊपर की तरफ जा रहा है, अब मुझे लग रहा है कि I think कि something beyond crude oil is fueling this drop in interest rate, which actually led to the decline of the US dollar. So this is one area मैं ध्यान में रखूंगा आने वाले दिन में. This is where this can be another vulnerable area. जैसे चाइना this time एक vulnerable area है. Chinese weakness can lead to lot of debt defaults, which finally could lead to जो crisis moment, recession moment की बात हम लोग कर रहे हैं. It could lead to, but as per history we are not there yet. But वो कौन सा ट्रिगर हो सकता है जानना है, फायदेमंद होता है. ये देखिए लास्ट टाइम मार्च में जब सिलिकॉन वैली बैंक का सेल ऑफ आया था, दिस इज सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट, उसके बाद मेजर सेल ऑफ, अपने इंडिया में भी उसका फेल हुआ था. Though that was not the crisis moment, but here similar kind of drop has begun. If ऐसा drop आज भी continue हुआ, then we can see, then probably we'll start seeing the impact in Nifty as well. क्योंकि ये जब रिस्क होता है, ये ग्लोबल मार्केट का रिस्क ये सारे मार्केट में फैलता है. So we should be a bit of careful on what's coming. The bond market is definitely trying to signal something. यहाँ पे बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज नॉट एबल टू होल्ड अप डिस्पाइट ये जो फेडरल रिजर्व का हिंट कि वो लोग ज्यादा टाइम हेल्ड करेंगे इंटरेस्ट रेट को. क्या फेडरल रिजर्व का नेक्स्ट मूव इंटरेस्ट रेट कट है? हाँ, वो लोग डायरेक्ट अनाउंस कर दिए, और जितना वो अनाउंस किए आई थिंक हर बार उनका पेस उससे फास्ट होता है, तो इस बार भी होगा. And every time they do the red cards, it finally leads to that vantage moment of crisis. जो लोग मेरे क्लास किए हैं, you are aware of this, how to navigate through this crisis जो ये आने वाले हैं. और आपके पास मेरा सेटअप का एक्सेस भी है. So आप सिंपली ईरान मार्केट्स में जाके आप ये सारे कोर्स जिसमें मैं अटैच्ड हूँ, आप उनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं.
So all the best from my side and happy trading.